Good morning, class 6. Welcome back to your biology classroom once again. Today I will discuss common respiratory diseases. But before it, I will discuss some short question is here. Just look at it. First question is, which organ is called the voice box? Larynx is also known as the voice box or vocal cord. Which membrane covers the lungs? Pleural membrane covers the lungs. What is the muscular sheet below the lungs called? The muscular sheet below the lungs, that is known as diaphragm. Where does the exchange of gases takes place? Inside the lungs, through alveolar sac or alveoli, the gaseous exchange takes place. What is formed when oxygen combines with hemoglobin? When oxygen combines with hemoglobin, it turns into oxyhemoglobin. Next, common respiratory disease. Asthma. Asthma is a common long-term respiratory disease. फर्स्ट लाइन में दाग लगाना, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जल्दी मतलब ठीक नहीं होता है. लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिजीज. इट इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज ऑफ लंग्स. इन्फ्लेमेशन मतलब जलन महसूस होना इन द एयरवे ऑफ लंग्स. लंग्स में जिस पाथ के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उस पाथवे में हम लोग जलन महसूस होते हैं, इसीलिए हम लोग हांफने लगते हैं. एज ए रिजल्ट द पैसेज फॉर एयर टू पास इज रिड्यूस्ड एंड द पर्सन फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. इसीलिए क्या होता है, मतलब पाथवे अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो हम लोगों को एयर कम मात्रा में मिलेगा, इसलिए हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होता है. ए व्हीजिंग साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द चेस्ट वाइल ब्रीदिंग. मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं ऐसे लगता है कि हम लोग व्हिसल दे रहे हैं. Asthma is caused by the many factors such as exposure to air pollution and the allergens such as the pollens, dust, smoke, mites, spores and so on. So normally asthma किस लिए होता है? Exposure to air pollution. Main reason for asthma is air pollution and the enters of allergens. अगर allergens हम लोग का शरीर में अंदर में घुस जाता है तो उस दौरान हम लोग का asthma हो सकता है. Such as pollen grains, dust, smoke, mites, spores and so on. Breathing chilly air. अगर बहुत ज़्यादा ठंडा सांस लेंगे तो हम लोग हांफने लगेंगे. कॉमन कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है या दूसरा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उस दौरान एस्थमा हो सकता है. नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस. Bronchitis is caused by a virus. The virus is spread through the air when people cough or by direct contact. So normally bronchitis is caused by a virus. This virus spread through basically air when common people cough or sneezed by direct contact. It causes inflammation of the lining of bronchial tubes. So इसके लिए दाग लगाना. तो नॉर्मली हम लोग जलन महसूस कहाँ पे करेंगे? द इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब. तो लंग्स में जब ब्रोंकियल ट्यूब्स ऐसे दोबारा मतलब डिवाइड हो रहा है, उसका इनर लाइनिंग में हम लोग इन्फ्लेमेशन और जलन महसूस कर सकते हैं. Which carry air to and from the lungs. नॉर्मली जो लाइन वे पे हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं थ्रू लंग्स. The symptoms include coughing up, mucus, wheezing, shortness of breath and chest discomfort. नॉर्मली अगर हम ब्रोंकाइटिस होता है तो हम लोग क्या फील करेंगे? म्यूकस, हम लोग का खांसना, व्हीजिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हम लोग का लगता है कि हम लोग का चेस्ट भारी हो गया, मतलब पेन फील करेंगे. इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया and about 2 million people suffer from bronchitis every year. Bronchitis is treatable with medical help. Bronchitis is treatable मतलब हम लोग अगर ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ये ब्रोंकाइटिस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. नेक्स्ट, न्यूमोनिया. न्यूमोनिया इज द लंग इन्फेक्शन. इसका दाग लगाना. पर्टिकुलर लंग इन्फेक्शन इज न्यूमोनिया which primarily affects the alveoli. तो directly affect कहाँ पे होता है? alveoli में. It is usually caused by the bacteria, whereas bronchitis is caused by virus. Same way, pneumonia is caused by bacteria. But sometimes
ड्यू टू वायरसेस ऑल्सो, कुछ कुछ वक्त पे ये वायरस के द्वारा भी फैल सकता है. द सिम्टम्स इंक्लूड ड्राई कॉफ, चेस्ट पेन, फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. नॉर्मली सिम्टम्स क्या होता है? ड्राई कॉफ, सूखा खांसना, चेस्ट पेन मतलब हम लोग का चेस्ट में पेन महसूस होगा, फीवर उसी के साथ बहुत ज़्यादा जल हाई फीवर होता है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है. द लंग्स गेट फिल्ड विथ फ्लूइड. द पेशेंट एक्सपीरियंसेस चेस्ट पेन स्पेशली वाइल कॉफिंग. पूरा लंग में म्यूकस भर्ती हो जाता है, फ्लूइड में पूरा भर्ती हो जाता है. इस दौरान हम लोग अगर सांस लेने जाएंगे तो हम लोग का चेस्ट पेन महसूस होगा, जब स्पेशली खांसेंगे मतलब वाइल कॉफिंग वी फील चेस्ट पेन. ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज. प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. इफ न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इट इज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स. तो इफ न्यूमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है इट इज ट्रीटेबल बाय एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस और TB. Tuberculosis is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. So, नाम के साथ ये बैक्टीरिया की नाम भी याद रखना है. बैक्टीरिया का नाम क्या है? Mycobacterium tuberculosis. It is an infectious disease that spreads from person to person by droplet infection. So, what is droplet infection? When we talk to any infected person, if he sneezes or cough, then just water droplets come out from their mouth or nose. Then the tuberculosis bacteria just spread away. Tuberculosis may infect any part of the body, but mostly commonly affect the lungs. तो tuberculosis हम लोग का बॉडी के कोई भी पार्ट में इन्फेक्ट कर सकता है, but it specially affect the lungs. The symptoms include persistent cough, blood containing sputum. अगर ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो नॉर्मली हम लोग तो ऑलमोस्ट खांसेंगे हर टाइम और उसी के साथ ब्लड भी रिलीज हो सकता है. वेट लॉस होना, चेस्ट पेन, आफ्टरनून फीवर and shortness of breath. These are the common symptoms of tuberculosis. So student, you have to learn the symptoms of the tuberculosis as well as the name of the bacteria. Tuberculosis can be treated by taking several drugs for few months. It can be prevented by the vaccination. So normally हम लोग tuberculosis after treatment ये ठीक हो सकता है, but it can be easily prevented by the vaccination, जिसका नाम क्या है? BCG वैक्सीन. सो ये वैक्सीन का नाम भी याद रखना है. सो BCG वैक्सीन बेसिकली गिवन टू एनी चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंटिंग द tuberculosis. So student, hope all of you understood what I've discussed in this video. So for today, up to this portion, and this next class I will discuss the exercise.